हेलो एंड गुड इवनिंग। इवनिंग गुड है नहीं है, डिपेंड्स ये वीक आपका कैसा गया। और इस वीक में आपके पोजीशंस ने किस तरीके के रिटर्न्स जनरेट किए या नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट किए। लास्ट वीक और उसके पहले भी जब भी हमने एके से पूछा तो उन्होंने हमें रेंज प्रॉपरली दी थी। बट लास्ट वीक उन्होंने बोला था कि ट्रेड ही मत करना अगर रेंज नहीं टूटे तो। बहुत टाइम तक वेट किए, 2 बार इस वीक में रेंज टूटी, बट ट्रेड्स कुछ सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो कंफ्यूजन आई एम प्रीटी श्योर आप लोग के मन में भी होगा, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स आए हैं जहां पे लोग पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली अब क्या करना है, कैसे करना है। तो आई डोंट थिंक वी शुड वेस्ट मच ऑफ टाइम और डायरेक्टली जाते हैं एके के पास और समझते हैं कि भाई करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो लेट्स ब्रिंग हिम इन। हाय एके, गुड इवनिंग। Hi, good evening. Good evening. How are you? आय, ये छोड़िए, हाय हेलो होता रहेगा। सीरियसली बताइए, हाउ आर द थिंग्स हैपनिंग? रेंज में रहेगा, ट्रेड नहीं करना है, 2 बार रेंज टूटी, स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी, क्या होने वाला है? बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत कंफ्यूजन है। जिस दिन Let ट्रम्प आए उस दिन ऐसा लगा था कि रेंज ब्रेकआउट हो जाएगी और हम नई ट्रैजेक्टरी पकड़ रहे हैं, नेक्स्ट डे फिर प्रॉफिट टेकिंग आ गई। सो देर इज correct. सो मच ऑफ कंफ्यूजन एंड सो मेनी डीएम्स आर देयर। प्लीज हेल्प अस आउट और इस रेंज से बाहर निकालिए, अदरवाइज इरिटेशन बढ़ने वाला है। Sure, sure, sure. I think please calm down. I think I can understand. I'm sure all quite a few number of investors must be in a similar mind space with the way markets have behaved. No doubt about that. But yeah, but so Rachit, let me just begin with how this week has panned out. Okay, एक तो देखिए एग्जैक्ट कॉपी है। इफ यू सी लास्ट वीक एंड लास्ट टू लास्ट वीक, मैंने आपको पॉइंट आउट भी किया था कि वीक बिगिन होता है, मार्केट्स टूटते हैं, पहले 2 दिन या 2.5 दिन मार्केट्स टूटते हैं। एज वी अप्रोच वीकली एक्सपायरी, वो पोजीशन थोड़ी कवर होती है, टू एन एक्सटेंट कवर होती है, एंड देन वी लीव इट एट लाइक दैट। इस बार का भी आप वीकली चार्ट देखिए तो मंडे ट्यूसडे टूटा है बाजार, ट्यूसडे के बाद जिस दिन अनाउंसमेंट आई है ट्रम्प की, उस दिन बहुत अपसाइड गया है, एंड देन वी हैव लेफ्ट इट लाइक दैट, ऊपर से थोड़ा नीचे करके फ्राइडे को ऐसे बंद किया। सो या सो द मूवमेंट what is now, I was studying this week's chart, and I decided this week to expand my study to a little longer period chart, कि ये जो करेक्शन जब से चालू हुआ है, ये करेक्शन रिजल्ट से चालू हुआ है। इनफैक्ट 26-27 September, when the quarter was ending, markets were at its peak 26,200 plus. Okay, तब से ये नीचे गिरना चालू हुआ है। Now let me talk about the broader chart, the 6-week chart. The 6-week chart is showing that we are in a bear zone now. Every week we have touched a lower low. That does not mean the market has not made rallies in between. Like I told you, short covering rallies आती रहेंगी, but undercurrent market का negative है, and we are going down because every week on week we are just making lower lows. काफी volatility थी लास्ट फ्यू couple of weeks से। This week I had estimated that the volatility would die down or reduce. विक्स देखिए तो विक्स एक्चुअली यही सजेस्ट करता है, because the week started with VIX at about 17 and now it's closer to 14. So gradually the volatility that way has reduced. A lot of downside upside has happened in a short range, which is very similar to last week. Okay, but I gave you a tight range of 350 points, correct? अब आप देखिए डिसाइसिवली रेंज टूटी नहीं है। The week began, it started cracking down below 24,100, 24,000. Okay, it went all the way down to 23,
23, one second, 23,846. That's the weekly low. Okay. But Right. again, like you said, again, it jumped up the next day and it quickly got into the range, right? The day US election result came in, we saw it go towards 500, 24,500, and it even crossed 24,500 intraday. But again, the closing was under 500. इससे क्या प्रूव होता है कि ये जो रेंज है, this is much more stronger than I actually thought. It is not so easy to break out uh, away from this range. मतलब इतने बड़े कंट्री का इलेक्शन हुआ, दैट इज वन की इवेंट, उसका रिजल्ट आया. Then there is another key event. US had rate cuts. UK had rate cuts. So ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस भी हो रहे हैं, साथ साथ हमारे रिजल्ट्स भी चल रहे हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, which have, some of the companies have given a sweet surprise. मतलब इतने खराब रिजल्ट्स के बाद you see a Ashok Leyland or you see a SBI where there are little better results. So, that is also a sigh of relief, no doubt about it. But we'll keep that aside. We are saying इतनी volatility के बाद भी breakouts from the range, and it is like a rubber band, it is coming back to its position. So did this itself means that if we are looking at consolidation, this is a very very appropriate range to assume कि हम यहाँ पे consolidate करेंगे. One thing that has created some sort of uneasiness in my mind, and I'm pretty sure it will create some kind of confusion. In the very beginning, you told us that we are going down. Does that mean that we have entered in a bear market, or we are still trying to understand as to what kind of developments are happening? If you could just clarify it a bit. Rachit, let me tell you, this is my personal view. I do not, essentially represent uh, anybody. This is my Right. personal view. I feel the bear phase or the bear market you're talking about, I feel fundamentally we are in a bear phase since a while now. It has been more than 2 quarters. So, it will be safe to assume that a February March के बाद हम bear phase में आ गए हैं. जब से हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्चुअली हमारी एक्सपेक्टेशन को मैच करना छोड़े हैं, तब से हम बेयर फेज में ही हैं मार्केट में. If you remember when we started doing this weekly videos, I think it was sometime around February earlier this year. Right. Okay. And for many months I kept telling you that बाजार ओवरवैल्यूड लग रहा है, बट शॉर्ट मत करना. That was because of the liquidity that was there in the Correct. market. So I kept mentioning range. The markets were moving in a range. The range was shifting upwards because the undercurrent was positive. Okay. Now what I am in, अभी जो मैंने आपको बोला ना, इस वीक मैंने अपनी स्टडी थोड़े 6 वीक के चार्ट पे एक्सटेंड की है. तो अब मेरे को वो चार्ट देख के क्या लग रहा है, इस चीज का ऑपोजिट हो रहा है. The markets are moving in a range, but the range is moving downwards because the undercurrent is negative rather than positive. अब मैं बोलूंगा लॉन्ग मत करना. Was मतलब short मत करना, अब long मत करना. But but then, but I'll tell you, when I say short मत करना, long मत करना, it means that you do not take a big position and take it like an overnight or over the weekend. With all of this, because if you take a very long position, जैसे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे बहुत ही गिरा हुआ है बाजार, आपको लगता है कि ठीक है, अब तो अगले वीक गैप डाउन ही होगा, सॉरी अब तो अगले वीक पिकअप ही होगा बाजार, आप फ्राइडे को पोजीशन लेके बैठ जाते हैं लॉन्ग, और मंडे को गैप डाउन होता है, तो क्या करेंगे? So I am saying that do not indulge into long positions which are risky. The risk associated with what it was associated with short position, as tempting it was,
The same thing is now associated with long position. And why I am saying that we are on the downside, because जो 6 वीक का चार्ट है, वो 6 वीक का चार्ट मेरे को ये बता रहा है कि एवरी वीक वी आर डूइंग अ लोअर बॉटम. In fact, last week when I told you that we did a double bottom at 24 152 and 162, something like that, right? उस लेवल पे 10 पॉइंट के गैप में हमने डबल बॉटम मारा था. तो दैट वाज, that is, so to say, technically speaking, that has become a little stronger support, right? इस वीक वो वॉलेटिलिटी कह लो या न्यूज फ्लो कह लो, उस वो टूटा. वो टूट के सिमिलर पैटर्न 23,846 एंड 23,855, दो डबल बॉटम फिर मारा है. तो आप देख रहे हो 24,150 के आसपास एंड 23,850 के आसपास 400-500 पॉइंट टोटल नीचे किया है. सेम डबल बॉटम मारा है. एंड अर्लियर इन द वीक मंडे ट्यूसडे में डबल बॉटम मारा है. लास्ट वीक did the same thing, only 400 points above. This week we've done the same thing, 400 points नीचे. सो एक एक पैटर्न जनरेट हो रहा है. अगर ये वीकनेस रहती है तो अगले वीक 23,500 पे मारेंगे डबल बॉटम. Okay, so This for is this next is week, only this is only a pattern that I have observed. okay, एंड okay, एंड ये चीज रिवर्स कैसे हो सकती है कि कोई ऐसी न्यूज आए जो मार्केट को एक लंबे पीरियड के लिए एक होप दे. अब वो कोई चीज, अब आप देखिए सारे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आ गए हैं. जितने अच्छे आने थे उसमें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी हो गया है. यूएस इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया है. नाउ एवरीथिंग इज अ स्पेक्यूलेशन दैट दैट going forward we might hit a zone right now. अच्छा, I'm quickly coming to the week forward also. right, right. Right. So week forward मुझे ये continuation लगता है. ओके, लाइक आई सेड, मेरे को डाउन ट्रेंड लग रहा है एंड अंडर करेंट नेगेटिव लग रहा है बिकॉज ऑफ द लोअर लोज दैट वी हैव डन. अगेन इफ 400-500 पॉइंट्स का लो हमने मारा है और डबल बॉटम दिया है, तो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ टेक्निकल सपोर्ट लेवल. सो वी कैन, जो रेंज मैंने आपको बोला कि 24,100 या 150 से 24,500 की रेंज है, I would assume that the coming week will have the same range shifted 400 points downwards. 23,850 to 24,000. I'm sorry, 23,850 to 24,000 will be the range for next week? Likely. Okay. Likely. Again, we have to keep a close watch on volatility. If इस रेंज में बहुत वॉलेटाइल होते हैं तो इस रेंज में कोई पोजीशन मत डालिए. एंड एज टेम्पटेड एज यू गेट कि बाजार 2% 3% नीचे जा रहा है मंडे को ट्यूसडे को, आप लॉन्ग कर लो. डू नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट गो हैवी ऑन लॉन्ग. सेकेंडली, डू नॉट गो ओवरनाइट और ओवर वीकेंड ऑन लॉन्ग. बी वेरी केयरफुल ऑन टेकिंग अ लॉन्ग पोजिशन. शॉर्ट का क्या है, अभी ये मार्केट आ गया. शॉर्ट ऐसा है कि अगर आपने थोड़ी लंबी एक्सपायरी की शॉर्ट कर ली तो आपको सूनो और लेटर भाव आ जाएगा, आपको काटने मिल जाएगा. लॉन्ग का थोड़ा गिरते हुए मार्केट में पोजीशन, इट्स नॉट अ वेरी सेफ काइंड ऑफ ट्रेड. या तो यू डू अ लॉन्ग, या तो यू डू अ लॉन्ग पोजीशन where where you take a position and you see ki end of day you will cut, or you, whatever opportunity you get, you keep your targets low, achievable, that you will maybe 20 point 40 point ऊपर गया तो मैं काट दूंगा, ऐसे करके आप पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग का. because again I am saying these short covering rallies will continue coming, but all the rallies that you have seen, all the upside that you have seen in last almost 1.5 months now are essentially short covering rally. They are not कि I want to buy this stock because this is cheap. Got it. So I believe
we are again approaching a truncated week and Yeah. Monday to Thursday trade करना है और as AK is putting it very clear, ट्रेड रेंज टूटे तभी करना है. अगर रेंज नहीं टूटती है तो लॉन्ग ट्रेड में बहुत ज्यादा कॉशियस होकर चलना है. शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगर हायर लेवल्स मिले. और अगर ऐसा नहीं होता है तो नवंबर एक अक्टूबर की तरह ही ब्रेक वाला मंथ बनता हुआ दिख रहा है. सो इट्स बेटर दैट यू डोंट फाइट एंड लूज मनी till the time you don't understand. It's better you stay away or something really big happens in either sides and the range breaks, we can Yeah. initiate the trade. I, Else, I'd like to just add yeah, one thing. Range breaks decisively. So that becomes decisively a, is important. yeah, decisively is important because what happens इतनी volatility में एक दिन range break करके ऊपर jump कर जाता है बाजार. सो यू नो यू कैनॉट एक दिन का या एक इंट्राडे मूवमेंट पे आप कॉल नहीं ले सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ सपोर्ट इज ब्रोकन फॉर वन डे यू हैव टू वेट वन मोर डे. अगर वो 2 दिन ब्रोकन रहता है तो इट इज जस्ट एडिंग टू योर कॉन्फिडेंस दैट दिस इज अ नाइस टाइम टू शॉर्ट क्योंकि 2 दिन से नीचे चल रहा है. Right. इंस्टेड ऑफ जस्ट इंट्राडे मूवमेंट में आपने अगर जंप कर दिया तो आप फंस सकते हैं. Got it. तो रेंज टूटे कंफर्मेशन मिले तो ट्रेड इनिशिएट करें. Else stay away for some time. But I believe if we can add one thing more into this, Ankit, is it the right time the investors should put in money in an SIP mode, wherein at every 5 to 10% correction they can increase their position, or they should also stay away for some time? Yes, I agree. I agree. In fact, I have been telling people who are asking me, I've been telling them that if your horizon is 2 years and beyond, then it's a right time to start putting in money. Maybe start an SIP because you will get the. अगर ये जो मुझे लग रहा है ये bear phase है और ये over 2 years धीरे 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 जाएगा या over 6 months भी जाएगा. तो अगर आप हर महीने SIP करते हैं तो you are getting the advantage of a falling market. You are buying your stocks at a lower price. So when the graph turns back and goes up, your costing will be at a lower price and the next actual rally जो fresh buying पे आएगी, you get that advantage. अगर आपने 2022 से 24 के बीच में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपने हर हाई पॉइंट पे शेयर लिया है because every day it is going, every month it's going up rather than going down. So you're somewhere there, and then corrections, they happen steep. So you can get into red very easily. But when you pick up while it's going down, it's tough to get into red. Got it. So, as always, it was amazing talking to you and learning about the markets. क्या हुआ, क्या हो सकता है, अभी तो learning ही बोल सकते हैं क्योंकि earning हो नहीं रही है. Let's hope next week कुछ ऐसा हो कि हम कुछ ट्रेड कर पाए. नहीं कर पाएंगे तो आपके पास तो आएंगे ही आएंगे. Till that time, let's see how the market behaves. As always, it was amazing talking to you, and now I can say learning from you. And I hope to see you next weekend as well. Happy weekend. Thank you. Happy weekend to you too. Thank you. Bye bye.